हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप मुड़ीमा यूट्यूब चैनल फार्मा ड्रग्स इनको मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ फार्माकोड। आखिर ये फार्माकोड है क्या, इसके ऊपर हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फार्माकोड आल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल बाइनरी कोड। फार्माकोड क्या बोला जाता है, तो बाइनरी कोड भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ प्राइमरली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्रेजेंट टू रिप्रेजेंट नंबरिक डेटा। जो कोई नंबर होते हैं या नंबर का जो कोई डेटा होता है वो प्रेजेंट करने के लिए, वो शो करने के लिए क्या होता है, फार्माकोड यूज़ किया जाता है। ये फार्माकोड इज़ वन डायमेंशनल बारकोड। क्या होता है, एक वन डायमेंशनल बारकोड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल बार्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ ये सीरीज ऑफ वर्टिकल bars with verifying width. It is a type of barcode symbology widely used in the pharmaceutical industry for packaging control, medications, identifications and tracking purpose. और ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि पैकेजिंग का कंट्रोल रहे, मेडिकेशन आइडेंटिफाई हो जाए और ट्रैकिंग सिस्टम या ट्रैक पर्पस के लिए भी हम ये दिया जाता है, ताकि हमारा मटेरियल कहाँ से कहाँ तक गया ये भी हम ट्रैक कर सके और ये अपना ही ये पहचान सके। इट इज़ अ स्पेसिफिक implementations of barcode technology designed to encode numerical data। और देखिए दूसरा है, अनलाइक द बारकोड द फार्माकोड डज नॉट कंटेन एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स बट इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू इन अ बाइनरी फॉर्मेट। इसमें क्या देखिए, फार्माकोड अनलाइक द बारकोड द फार्माकोड डज नॉट कंटेन एनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ए बी सी डी ऐसा कुछ अल्फाबेटिकल नहीं होता, खाली 1 2 3 ऐसा अंक में ही दिया जाता है, ये नंबर में दिया जाता है। बट इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू इन बाइनरी फॉर्मेट, ईच बार इन द फार्माकोड corresponds to either 0 or 1, and the data is enclosed based on the positions and width of this bar. The encoding is typically based on the binary logarithm, where the width of each bar corresponds to a specific power of 2. The pharmacode is read from right to left, and with the bar position starting at 0 on the right, and by scanning the pharmacode with a compatible barcode scanner or in imaging device, the encoded numeric information can be extracted and processed for various purposes such as inventory management, product tracking and verification within the pharmaceutical supply chain। और ये जो फार्माकोड होते हैं, द फार्माकोड एंड बारकोड्स आर बोथ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस एंड ट्रैकिंग, बट दे डिफर इन देयर डिज़ाइन। यानी कि ये क्या है, फार्माकोड और बारकोड का डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है, अलग अलग दोनों से differ their design, purpose and application भी। बारकोड सच एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, बारकोड क्या होता है, सच एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी एंड इंटरनेशनल article number EAN are widely used identification systems in various industries including retail, logistics and manufacturing. Unlike pharmacodes, barcodes can be represented as both one-dimensional and two-dimensional symbols, allowing them to include wide range of numeric and alphanumeric characters. It consists of a series of parallel lines with a verifying width space representing different characters or information, and barcode can include product details such as the manufacturer, product code। बारकोड में क्या होता है, बारकोड includes the product details such as manufacturer, product code, price, along with the quick and accurate identification and inventory management. They are scanning using barcode readers or scanners. With the decode, the information represents associated data and further processing।
तो फ्रेंड्स ये होते हैं बार फार्माकोड। आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें दिया आर्टिकल, बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो मेन हमने आज इस पहली वीडियो हम क्या किया है, व्हाट इज फार्माकोड। फार्माकोड आप क्या है ये आपको आई थिंक पता चला होगा, पर थोड़ा रिपीट करेंगे। Pharmacode also known as pharmaceutical binary code. Okay, it is a primarily used in pharmaceutical industry and to represent the numeric data. जो कोई नंबरिक डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए फार्माकोड होता है। और ये फार्माकोड क्या होता है? ये फार्माकोड इज अ वन डायमेंशनल बार कोड दैट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल्स बार वेरीफाइंग विड्थ। अलग अलग उसकी विड्थ हो सकती है। इट इज अ टाइप ऑफ बार कोड सिंबोलॉजी वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर पैकेजिंग, कंट्रोल, मेडिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग पर्पस। ये याद रखना है आपको। इट इज स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बार कोड टेक्नोलॉजी डिजाइन टू इंक्लूड इट इज अ specific implementations of barcode technology designed to include the numeric data. What other terms are used to refer pharmacodes? और ऐसे कौन से अदर टर्म्स है जो फार्माकोड के लिए यूज़ की जाती है? तो देखिए फार्माकोड इज a generic term for the symbology used for packaging control in the pharmaceutical sector. There are other variations of the pharmacodes used in the pharmaceutical industry. Some of other pharmacode types includes, अभी देखिए फार्माकोड टाइप्स अलग अलग उसके क्या क्या है ये देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए फार्मास्यूटिकल बाइनरी कोड। फार्मास्यूटिकल बाइनरी कोड क्या है देखते हैं। दिस रिफर्स टू वन डायमेंशनल बार कोड that represent a numeric value. This term is often used as an alternative name of pharmacode. It emphasizes the binary nature of the barcode, which represents numeric data using a series of bars and verifying bits. इसे कहते हैं फार्मास्यूटिकल बाइनरी कोड। दूसरा होता है देखते फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल बाइनरी बार कोड। बाइनरी कोड और बाइनरी बार कोड अलग है, याद रखिए। Binary barcode, like the previous term, the pharmaceutical binary barcodes highlight the barcode binary nature and its uses in industry for encoding numeric data के लिए होते हैं। और फार्मा बारकोड इज अ colloquial term is to refer the pharmacode. It combines the words pharma, a short pharmaceutical, and the barcode to describe the barcode symbology specifically used in pharmaceutical context. What determines the value of each bar in pharmacode? What determines the value in each bar in barcode? Each bar value in pharmacode depends on its types, wide or narrow, and its position in the code. The position of the barcode sequence indicates the position value it represents. For example, the first bar in the sequence may represent the value 1, and the second bar represents 2, and the third bar represents 4, and so on. The position of value of the follow of binary progressions where each value is a double of the previous one. The width of the bar determines whether it represents 0 or 1. A wide bar typically represents 1, and while a narrow bar represents 0. The specific measurement of wide and narrow bars are determined by a specific pharmacode symbology being used. By combining the position and width of the bars, the numeric value of each bar is determined. determined. The overall barcode sequence then decoded based on the values, allowing for their representation of numeric data in a compact and efficient manner. लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आर द रिकमेंडेड मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ फॉर फार्माकोड। आपने देखा होगा कि फार्माकोड में एक लाइनिंग जो होती है कभी छोटी होती है कभी मोटी होती है, इसके होने ज़्यादा दिए है। शॉर्ट में देखेंगे हम
what are the recommended minimum and maximum length of the pharmacode? The recommended minimum and maximum length of the pharmacode can vary depending on their specific requirements and implementation guideline. However, there are general guidelines for minimum and maximum length of pharmacode. The minimum length of pharmacodes is typically 3 bars. यानी कि छोटे लाइन के कितने बार होते हैं? 3 बार होते हैं. वे which includes the value of 1. This is the smallest possible representation in a pharmacode. Minimum length ensures that the code has enough bar to convey the meaningful information. On the other hand, the maximum length of the pharmacode is often determined by practical considerations such as scanning speed and readability. Longer code can slow down scanning process and may become more prone to errors. There are common recommendations for the maximum length of the pharmacode is around 12 to 12 to 14 bars. It is important to note that the specific minimum maximum length of may differ based on symbology and standard being used, as well as industry specified requirement. Adhering the recommendations and length of guidelines helps to ensure the efficient scanning and accurate decoding of pharmacodes in various applications. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मिनिमम मैक्सिमम लेंथ की होती है ये देखा, उसके साथ डिटरमिनेंट ऑफ ईच वैल्यू बार क्या होता है, उसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं. फार्मास्यूटिकल बाइनरी कोड क्या है, बाइनरी कोड बार कोड क्या है, और फार्मा बार कोड क्या है, ये भी हमने देख लिया. इसके चलते हमने स्टार्टिंग को व्हाट इज़ अ फार्मा कोड, इसका ये क्यों होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी हमने देखा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. तब तक मिलते नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर.